एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और मेरे लास्ट वीडियो में जिसमें मैंने रेड लिपस्टिक शेयर की थी आपके साथ, दैट हैज़ बीन मोस्ट लव्ड बाय ऑल ऑफ यू। सो आई थॉट विंटर्स आ रहे हैं एंड ऑब्वियसली ऑफिस भी बहुत लोग का रिज्यूम हो चुका है, या फिर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बहुत सारी हो रही है। एंड समर अप्रोप्रिएट बहुत सारे ब्राइट कलर्स ऑलरेडी हो चुके हैं जो वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। आई थिंक विंटर अप्रोप्रिएट कलर्स भी कुछ होने चाहिए दैट वी शुड हैव इन आवर वैनिटी. So I'm going to share with you my top 5 nude winter appropriate colors that you can go ahead and apply without even being worried कि बहुत गॉडी तो नहीं लग रहा, बहुत over the top तो नहीं लग रहा. तो without wasting any further time, let me just quickly jump into it. So those are the swatches of my favorite 5 nude lipsticks that I've been using throughout the weather has changed, and even on daily basis I prefer using these colors because they are very natural, they're very warm, बहुत ज़्यादा over the top नहीं लगता, and you can easily slay these colors. So these colors have been used on a bare skin. I do not have any sort of foundation on my skin. It's a bare skin ताकि आपको पता चले कि exactly कैसा color पे ऑफ आएगा. I have pigmented lips, तो मैंने अपने lips को भी बहुत ज़्यादा what do you say, फाउंडेशन से कंसील नहीं किया था, जस्ट टू लेट यू गाइज नो कि इनका एक्चुअल कलर पे ऑफ क्या है. सो इफ़ यू हैव अप्लाइड एनी ऑफ दीज लिपस्टिक्स अर्लियर, यू हैव देम, प्लीज डू लेट मी नो अबाउट दैट ऑल्सो इन द कॉमेंट्स बॉक्स बिलो. एंड इफ यू न्यू टू माई चैनल, you first time viewing this particular page or particular video, please go ahead and subscribe to my channel. Don't forget that, and also hit the bell button so that every time I upload a video you guys get to know about that also. Okay, कोई भी सजेशन, किसी तरीके के रिव्यूज़ हों, प्लीज़ गो ahead and jot them down in the comments box below. You've been seeing Seema today. You have a great day. Bye.